अपना उत्सव यानी हम सबका उत्सव, समूचे भारत का उत्सव। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और असम के हरे भरे जंगलों से लेकर राजस्थान के मरु के टीलों तक का एक चित्र उभरता है। पर इस नक्शे के रंग भरने का काम अलग अलग क्षेत्रों की हमारी रंग बिरंगी लोक संस्कृति करती है। हमारे लोकगीतों, हमारे लोक नृत्यों में समूचे भारत का नक्शा दिखाई देता है। हम उसी नक्शे का एक चित्र आपको दिखा रहे हैं, बम्बई यानी देश की औद्योगिक राजधानी का एक नक्शा। बम्बई के ये दृश्य हमको क्रीड़ा संकुल तक ला रहे हैं। ये है अंधेरी स्थित क्रीड़ा संकुल, जहां आज का ये भव्य आयोजन अपना उत्सव का उद्घाटन हो रहा है। एक विशाल मंच बीच में और उसके चारों तरफ 7 मंच, और इन मंचों पर आज यहाँ एकत्र लगभग 1500 कलाकार अपनी कला से आपको सम्मोहित करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और असम से लेकर राजस्थान के मरु के टीलों तक भारा भारत एक विशाल संस्कृति का उद्घाटक है, एक विशाल संस्कृति का वाहक है। अलग अलग क्षेत्रों की हमारी संस्कृतियां भले ही थोड़ी अलग अलग हों, लेकिन हमारी लोक कला, हमारी लोक संस्कृति ने उस सबको एक बनाया हुआ है। और इस रंग बिरंगी संस्कृति में, अलग अलग प्रदेशों की रंग बिरंगी संस्कृति में हम अनेकता में एकता का दर्शन करते हैं। अपना उत्सव इसी अनेकता में एकता को प्रदर्शित करने वाला एक प्रयास है। यह बताने वाला एक प्रयास कि हम चाहे किसी भी प्रदेश के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, हम एक हैं। लोक कलाएं भाषा और क्षेत्रों की सीमाओं को तोड़ती हैं। भूगोल की सीमाओं को लांघकर हम आज एक सांस्कृतिक यात्रा के दूसरे पड़ाव पर हैं। पहला पड़ाव 1986 में दिल्ली में मनाया गया अपना उत्सव था, दूसरा ये बम्बई में मनाया जा रहा है। संस्कृति हमारे अस्तित्व का अविभाज्य अंग है और हमारी संस्कृति का रिश्ता हमारे जीवन और सांसों का रिश्ता हुआ करता है। उसी संस्कृति को देखने, समझने और उसके साथ जीने की एक कोशिश इस अपना उत्सव में है। बम्बई में आयोजित इस अपना उत्सव में 7 सांस्कृतिक केंद्रों के कलाकारों को इकट्ठा किया गया है। इन 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों के लगभग 3500 कलाकार आज बम्बई में हैं, जो आने वाले एक पखवाड़े तक बम्बई के अलग अलग हिस्सों को अपनी कला से सम्मोहित करेंगे। और अब देखिए, ये शुरुआत हो रही है अपना उत्सव के भव्य आयोजन की। प्रताप, जरा लीजिए आप। Welcome viewers to Apana Utsav in Bombay. This is the second Utsav, the first one having been held in November 1986 in New Delhi. Here we are in the Andheri Sports Stadium in Bombay with a crowd of about 25,000 people gathered to watch 7,000 artists performing from all parts of India. Geographically, it is a cliche to say that India is a vast subcontinent, but India's culture is in a sense the living history of the human spirit. You have just been watching a young boy from Rajasthan performing. You will today see people from a variety of parts of India performing a variety of dances and music. For, as a famous philosopher has said, life is short and art is long. And the thing that binds not only India together, but generations of Indians and indeed all of humanity is the thread of culture. In all the diversity of India, there is this common bond, the unifying force that gives the whole ethos a distinct look of oneness. Today, for the people of Bombay, it will be a remarkable event to acquaint themselves without traveling the cultures of the different parts of India.
The VIPs are gathered here. Prime Minister Rajiv Gandhi is here inaugurating this function. He will be, we have just heard news that the Prime Minister is not going to be present to inaugurate this function. I assume that is because of the mourning for the Emperor Hirohito of Japan, and as a sign of grief and appreciation of the sorrow that is shared both by Japan and India, the Prime Minister, I've just heard, is not attending the function. However, the function will continue, and we shall continue to bring you scenes from the function. You might notice that there are a number of circles. These are platforms in circular form. There is one big central platform and 7 others, making altogether 8. The general theme being one of unity in diversity. The 3 main organizers of the function in Bombay, the artists of course have come from everywhere, and I shall tell you about that after the inaugural song composed. धरती गगन
डफ ढोल ताशे चंग रहे, मंगल मिलन मन संग रहे, अंधियार तिमिर बुहारती, अंधियार तिमिर बुहारती। जय देश भारत भारती, जय देश भारत भारती। गंगा जमुना गोदावरी, गंगा जमुना गोदावरी, भर दे कला की गागरी, भर दे कला की गागरी। यह पर्व उत्सव भारती, यह पर्व उत्सव भारती। जय देश भारत भारती, जय देश भारत भारती। गंगा जमुना गोदावरी, गंगा जमुना गोदावरी। जय देश भारत भारती, जय देश भारत भारती, जय देश भारत भारती। This massive function, attended by about 7,000 artists and, as I said, about 20,000 people gathered here in the stadium, is representative of the vast diversity of India, the colorful diversity. The voice you are hearing now, apart from mine, is that of Amol Palekar, film actor, stage artist, who has been one of the prime organizers of this function here in Bombay. Amol Palekar, along with his wife Chitra Palekar and Mrs. Vijaya Mehta, have been the three main people organizing these streams into an ocean of song and dance today. Vishwanathji, I'll take over from here for a moment, if I may. This is a dance from Karnataka. It's called the Patta Kunita. The patta is a 16-cubit long pole decorated with colored cloth with a sail at the top. The pole is fixed into a pouch in the cross belt worn by the artists. And this dance on stilts shows amazing dexterity by these artists. Since the theme is unity in diversity, the organizers have decided to show a variety of dances from different parts of India that have similar seeming methods and manners. As the evening progresses, you will find that indeed it is not only fascinating to watch the similarities in some dances, but also how it is possible sometimes to confuse one for the other. Vishwanath ji, perhaps you'd like to say a few words? आपने बताया कि किस तरह है इन रंगों में हम उलझ सकते हैं। एक साथ इस समय मंच पर 2 या 3 नृत्य दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के नृत्य।
कर्नाटक का ये नृत्य पूजा कुनी था। मांड्या, बंगलोर और कोलार जिलों में ये नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय भी। देवी शक्ति की उपासना के समय इस नृत्य को किया जाता है। As Vishwanath was telling you just now in Hindi, this is a dance form that you have just seen, the Puja Kunitha, which is performed in the worship of the goddess Shakti. Shakti, of course, meaning power. Now, we are seeing another array of dancers in their yellow clothes swirling past us. And these huge drums that will come into play to complement these little ones at some point in the evening. Here carrying on their heads in honor of the goddess Shakti. And you will see behind a dancer who carries on his head a bamboo frame. A bamboo frame covered with a beautiful sari-like cloth. And on that is the face of the goddess made of beaten copper. Many of these dances, like much of drama, whether in India or other classical cultures of the world, have come about from origins of ritual. मैं आपको शुरू में बता रहा था कि इस सारे पर्व के लिए 7 कला केंद्रों में बांटा गया है देश को। मैं उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। पहला केंद्र है दक्षिण मध्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को लिया गया है। उसके बाद पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का समावेश है। दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप हैं। आप जरा आगे। Yeah. Now to explain to you what this is called the Tapeta Gallu. It's a folk form in which more than 10 people take part singing songs in praise of the local goddess. The dancers use drums which are hung around their necks. You can see them beating them and creating melodious rhythms. To beat them in unison while jumping about is in itself quite an acrobatic feat. The troupe comes from Srikakulam district. जैसा कि प्रताप आपको बता रहे थे, छपाटे गल्लू नृत्य ये, इसमें 10 कलाकार एक साथ नाचते हैं। नाचते नाचते वो अपने शरीर के अंगों को कुछ इस तरह से हिलाते डुलाते हैं कि लगता है जैसे कोई कसरत कर रहे हों। श्रीकाकुलम जिले का ये नृत्य काफ़ी लोकप्रिय है उस क्षेत्र में। This dance that you're seeing now, viewers, is the Panthi Nritya. It's a popular dance of the Chhattisgarh Satnamis. The Chhattisgarh Satnami Panth was founded in 1877 AD. The Satnamis are not image worshippers, they are monotheists and believe that God is Nirguna and Nirakar. The Panthi Nritya is vigorous and rhythmic, as you can see. The dancers dance to the music of the mridang and cymbals
chanting to themselves sometimes Satnam, Satnam. And here again are the other dancers dancing with their drums that we told you about. So it is a feast of color, a variety of dishes set before you as on a thali or a tray. रंगों का त्योहार जैसा कि मैंने कहा था मनाया जा रहा है। यहाँ रंग बिरंगी पोशाकों में देश की अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियाँ, देश की अलग अलग क्षेत्र की कला हमारे सामने है। अभी अभी आपने पांथी नृत्य देखा था, थापेट गुल्लू देखा था। ये है प्रांतीय नृत्य, छत्तीसगढ़ी के सतनामियों के नृत्य होता है। ये सतनामी परमात्मा को निर्गुण और निराकार मानते हैं और उसी की आराधना करते हैं। इस नृत्य की गति और ये लौट चले 4 नृत्यकारों के समूह आपके सामने से। अब एक नया समूह हमारे सामने आएगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बता रहा था कि किस तरह हमने देश को सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा हुआ है। एक पूर्व क्षेत्र है हमारा जिसमें मुख्य केंद्र शांति निकेतन है और इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और असम तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपों को हमने शामिल किया हुआ है। उत्तर क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का समावेश है। और इसी तरह उत्तर मध्य क्षेत्र में जिसका मुख्य केंद्र इलाहाबाद है, बिहार को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है और प्रदेश दिल्ली भी इसमें शामिल है। अब देखिए नया नृत्य। As Vishwanath was telling you just now, the Utsav programs and festivities are organized in 7 zones by 7 zone officers who have under them a whole hierarchy of people working towards this. In front of you now is another troupe from another part of India with colorful costumes and their own forms of celebrating and dancing. इस समय मंच पर 4 और 5 नृत्य एक साथ हो रहे हैं। चक्री हो रहा है, कालबेलिया हो रहा है, घूमर हो रहा है, राय हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों के ये सारे नृत्य कुल मिलाकर एक ही भावना को निरूपित करते हैं, इसलिए आयोजकों ने इन्हें एक साथ रखा है। This is the Chakri Dance from Rajasthan. It has been said that dance and music are the heart and soul of the gypsy. And this is no truer for the gypsy than it is for the nomadic Kanjar tribe of Rajasthan, who perform the Chakri Dance with gay abandon. Although performed by Kanjars scattered all over the state, the Chakri dancers from the Hadodi areas of Kota Bundi and Jawalajar districts are famous. These dances are performed on many occasions. Kanjar girls do the Chakri dance, especially during weddings or at the reception of barats, which amounts really to the same thing. They whirl round and round in circles with flowing skirts. The Kanjar girls are like spinning tops, hence the name Chakri. चक्री नृत्य जैसा कि नाम बताता है, घूमने का नृत्य है। घूमना एक गति के साथ जो आप देख रहे हैं। राजस्थान का ये नृत्य बहुत लोकप्रिय है उस क्षेत्र में और राजस्थान के कलाकार भी लोकप्रिय हैं उस क्षेत्र में। वाद्यों के साथ पांवों की थिरकन का तालमेल, चेहरों पर एक मस्ती। और राजस्थान का रंग बिरंगा परिधान, सब मिलकर एक समा बांध रहे हैं यहाँ इस मंच में। ये चक्री नृत्य का चरम है जहाँ गति इतनी तेज हो जाती है। क्या बात है।
नृत्य है जो आप देख रहे हैं इस समय। राई नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। As Vishwanath said to you just now, you are also witnessing simultaneously, along with the Chakri Dance which we were seeing, the Rai dance from Madhya Pradesh. You notice the tremendous similarity between two regions of India and indeed between two peoples and two dances. और ये है दूसरे हिस्से का समापन। अब शुरू होगा तीसरा हिस्सा। शंख ध्वनि के साथ शुरू हो रहा है कलाकारों का आना मंच की तरफ। नगाड़ों की आवाज शायद आप तक पहुंच रही होगी। Now I see coming onto the stage all kinds of animal dances from various parts of India. This is the snow lion. Oh, he enjoys himself. Two of them together. These dances from different parts of India are all composed of a variety of animal presentations. This takes a considerable amount of dexterity. With two people inside that, you wouldn't think that. You would think that was a real animal. Lion was seen, now we have the monkey, and you will also see the yak of Ladakh. There's the monkey with his long tail. Other representations too. Some of the folk arts, as always, whether in Maharashtra or the rest of India, have also a great amount of acrobatics involved and a great deal of dexterity and skill. You'd think the circus had also come to town at the same time, a traditional circus that has spanned centuries of action. This is the yak. And now the fire dancers, one of them balancing an amazing number of pots on his head, and the other twirling his fire wheel of star-like radiance. The yak dance that you were seeing just now
In between this vast conglomeration of a variety of cultures, there's the yak again. The yak, you might say, up in the mountains, in the high mountains, is a man's best friend. Hence, bandar bhi hai. It's amazing how many animals are thought of as friends of man. The snow lion dance, which is called the Singhi Jam of Sikkim, is associated with the high peaks and looks like the legendary lion. The snow lion, incidentally, for your information, is considered an important cultural symbol of the state. And now, coming onto the stage, a variety of horse dances from different parts of India. The horse again, just like the other animals, has often been thought of as one of the closest friends of man. This volatile animal represented in different folk forms by people from different parts of India. घोड़े मोदानी, ये अश्व नृत्य कहलाता है. आपको बता रहे थे, ये जो नृत्य हो रहे हैं इस समय मंच पर, धोबिया, भांड पाथेर, कच्छी घोड़ी और घोड़े मोडगी. This is the Ghoda Modni. The spectacular horse dance comes from Goa, showing the mounted warrior leaving for war, adorned in full traditional dress. संगीत की आवाज तेज होती जाती है, नृत्य और तेज हो जाते हैं. और लौट चले कलाकार अपनी अपनी कला दिखाकर. जैसा कि आपने देखा, मंच पर अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार आते हैं और कुछ मिलती जुलती कला दिखाकर हमें हर्षित कर जाते हैं. मैं नहीं जानता आप तक इस स्टेज से जो गूंज रही तालियों की आवाज़ें पहुंच रही है या नहीं, लेकिन दर्शक इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं यहाँ.
बार फिर तैयार है अगले नृत्य को सामने देखने के लिए। The warriors have left the stage, taking with them their prancing horses and other mascots. And now a new troop, other troops invade, it seems, the other platforms to take over and make this their arena. नदी के प्रवाह की तरह एक के बाद लहरें उठती हैं कला की दूसरी। Now you have the Dholu Konita, which shows the drum as a major feature of the dance. So too the other dancers who will come to the other platforms will have this in common, that drums, rhythm and vigorous movements characterize again a thread binding a variety of dances from a variety of parts of India. This is the chabrang, a traditional drum from Sikkim. The dancers beat the drum hung around their necks with an open palm on one side and with a stick on the other. It's a songless dance, which is a rhythmic imitation of birds and animals. जो सूर्य पश्चिम में अस्त होने जा रहा है, यहाँ प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ये प्रकाश बत्तियों का ही नहीं, हमारी कलाओं का भी है। The peculiar quality and strength of Indian culture
is its ability to absorb and synthesize. And so even here at the celebration of Apana Utsav in Bombay, the theme is the similarity and the underlying unity in the diverse dances that are being performed here this evening. Comes awake to the night, and the lights come on in the stadium. The celebration of Apana Utsav continues. Dancers you have just seen were from the north and northeast zones, and they were the Lama, the Wangala, the Bihu, the Sarlamkai, the Sapolo, and a Ladakhi dance, the Ladakhi wedding dance. Now again, here before this vast gathering, new troops come dancing towards the center, towards the stage.
tambourines, drums hanging around necks, drums roll like coins, like huge mammoth coins along. It's an amazing spectacle that we have seen, and we are continuing to see as the next troops prepare to enter what seems almost a cultural commingling, a mammoth ocean of the different streams from all over India. संस्कृतियों का संगम, जैसा कि अभी प्रताप आपको बता रहे थे, हमारे सामने है। अपना उत्सव भारत की आत्मा का उत्सव है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कथक रंगों से सजी अपनी ही धुन पे थिरकती धरती का गीत गाती ये टोलियां हमारे सामने हैं।